Hi, good evening, everybody. I welcome you all for the online roadshow meet of Phoenix Overseas Limited. I'm Shabina, your host for the today's virtual event. I'm excited to introduce Phoenix Overseas Limited, a three-star export house recognized by the Ministry of Commerce and Industry. The company specializes in trading and agricultural commodities such as corn, spices, pulses, and animal feed, while also importing lentils and dal. Phoenix exports to Bangladesh and other Asian countries and manufactures fashion accessories like jute, cotton, canvas, leather items for clients in Europe and Australia. So today I have a great lineup for you today, featuring company's presentation from the Phoenix management team, which dwells insights into the company's vision, strategy, growth prospects, ending with the question and answer session. So now it's my pleasure to introduce our esteemed guest, Mr. Apresh Nandi. I Hi. have along with him, I have Mr. Jayant Kumar Ghosh, and followed by Mr. Uday Narayanan Singh, Hello. and I have Mr. Sandeep Nabalgaria. So Hello. along, hi sir. Along with this, I have Mr. Rinav Manseda, Associate Director, Khandwala Securities Limited. Hello. I welcome you all, sir. Before I begin, please note that you can submit your question and answer sessions anytime in the chat box, and we will be addressing them during our question and answer session. So let's get started. So our first speaker will be Mr. Apresh Nandi, whose presence promises an informative and engaging discussion, and he will share an overview of the company's presentation. So over to Mr. Apresh. Hello. Actually, we have started the company in 2001 and it's incorporated on 2002. तो 2002 से हम लोग का जर्नी फुली स्टार्ट हुआ. हम लोग मेनली एक्सपोर्ट करते हैं एग्रोबेस कमोडिटी. एग्रोबेस कमोडिटी में आपका सब तरह का ही है, व्हीट, राइस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल केक्स एंड स्पाइसेस आल्सो, ड्राई रेड चिलीज एक्सेट्रा. तो बांग्लादेश में हम लोग का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है. And over the 24 years we have achieved our goodwill. हम लोग का जो मेन बिजनेस एसोसिएट है वो है आपका फीड मिल मैन्युफैक्चरर. हम लोग ट्रेडर से बहुत कम मतलब बहुत ही कम काम करते हैं, इसलिए क्योंकि एग्रोबेस कमोडिटी में प्राइस वोलेटिलिटी बहुत है. तो टू सेफगार्ड अस हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं बांग्लादेश में जो रिनाउंड फीड मिल है, लाइक एसीआई गोदरेज, लाइक आफ्ताब फीड मिल, स्पेक्ट्रा, हेक्सा फीड मिल and quality feed mill, etc., etc. They are our main client. And over the year, we have achieved the goodwill, and we are very thankful to them because they trusted us over the year. तो अभी हम लोग का एक्सपोर्ट तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, लेकिन हम लोग बीसीएल बायो एनर्जी बोल के एक फार्म हम लोग का फ्लोट किया, जिसका 51% स्टेक है. हम लोग का एक फ्लैगशिप कंपनी है बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एंड 29% स्टेक होल्डर है फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड, एंड बाकी 20% जो है वो हम लोग का एसोसिएट है. हम लोग का जो प्रोडक्शन चालू होगा अक्टूबर से, मतलब likely we can start our production in October 2024. हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होगा क्रूड ऑयल हम लोग डोमेस्टिकली सेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ए कैश रिच प्रोडक्ट, मतलब इमीडिएट यू कैन गेट द अमाउंट आफ्टर सप्लाइंग द मटेरियल्स. एंड जो थोड़ा बहुत उधारी का है, मतलब क्रेडिट बिजनेस है, वो है आपका डी ऑयल राइस ब्रांड एंड डी ऑयल मस्टर्ड केक. इसमें हम लोग का जो प्लानिंग है, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे साउथ एशियन कंट्री एंड बांग्लादेश. और हम लोग का एक कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन स्टोर इन मालदा. उसमें हम लोग का पोटैटो, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फिश एंड आइसक्रीम हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. उसमें हम लोग क्या किया, अभी एक मशरूम का
कल्टीवेशन प्रोसेस चालू किया। तो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट वाइज सक्सेसफुल, तो मोस्ट लाइकली वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम एंड ऑफ नवंबर। और इसमें आपका अच्छा ये होगा, मतलब प्रोडक्शन अच्छा ही होगा, एंड थ्रू आउट द ईयर वी कैन सप्लाई द मटेरियल्स। एक्चुअली मशरूम में क्या है, मशरूम है आपका सीजनल बिजनेस, ओनली विंटर एवरीबॉडी कैन प्रोड्यूस द मशरूम। लेकिन हम लोग का जो है कोल्ड एनवायरनमेंट एरिया में है, इसलिए हम लोग का मशरूम थ्रू आउट द ईयर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग का क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा। और बांग्लादेश का जो बात है, बांग्लादेश का बिजनेस बढ़ेगा इसलिए, जिसे हम लोग जो करते हैं वो लोग सब फूड आइटम है। फूड मीन्स आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोल्ट्री फीड एंड फिश फीड, एंड बांग्लादेश इज नॉन वेज, they are habituated to eat in they are basically fond of non-veg food, means सुबह भी आपका नाश्ता में भी आपका चिकन चाहिए, रात को भी चिकन चाहिए, ऐसा कुछ। तो इसके लिए क्या होगा, इसका थोड़ा इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। और हम लोग जो मेंटेन करते हैं वो है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज भी कर जाए, वी डोंट चार्ज टू कस्टमर, क्योंकि प्राइस एक बार फिक्स हो गया तो दैट इज फाइनल। तो फॉर दैट पर्पस बायर प्रेफर्ड अस। और जो क्वालिटी कमिटमेंट, मतलब अभी जो एक्सपोर्टर लोग करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा अलग से करता हूँ। हम लोग का टीम रहता है फॉर द टू कीप द क्वालिटी एंड कमिटमेंट। इसके लिए हम लोग बांग्लादेश में अच्छा खासा हम लोग का गुडे है फीड इंडस्ट्री में। एंड फैशन एक्सेसरीज में हम लोग का स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग प्लान अभी किया है। उसमें जूट, कॉटन, लेदर सभी होगा, लेकिन हम लोग अभी जोर दे रहे हैं जूट कॉटन में, क्योंकि आने वाला दिन में लेदर धीरे धीरे बहुत महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चांस है कि बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या किया, हम लोग कॉटन, कैनवास, जूट एंड जूट विद लेदर ट्रिम बैग्स हम लोग प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। हम लोग का मेन जो का कंट्री है, उसमें है आपका फ्रांस है, जर्मनी है, एंड यूके है, यूएस है, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। और हम लोग का मेन प्रोडक्ट है कॉर्न, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल केक, रेपसीड ऑयल केक, जो आपका इसमें आपका फीड मैन्युफैक्चरिंग में, ये आपका फीड मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। और जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में हम लोग का तो फूड प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। और टू मेंटेन द क्वालिटी, ऑलरेडी वी हैव अचीव द फेम इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का मेन सोर्सिंग है बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र एंड एमपी। एंड फॉर दैट पर्पस हम लोग जो जिससे हम लोग सोर्सिंग करते हैं, दे आर वेरी काइंड एनफ टू कोऑपरेट विद अस। एंड प्राइस अगर वोलाटाइल होगा भी, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइस बढ़ भी जाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू गेट द मटेरियल्स। हम लोग का ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और लॉजिस्टिक सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, खास करके रोड में एंड रेल में भी लॉजिस्टिक सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। पहले रेल में क्या था आपका, अगर आप एलसी का इंडियन रजिस्ट्रेशन कराते, इंडियन रजिस्ट्रेशन कराने में कोई एलसी नहीं जरूरत होता था। अभी एलसी लग, उसमें एलसी का जरूरत है, सो दैट जो एक्चुअल कस्टमर है उसको साथ साथ रेट मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग का लॉजिस्टिक और इम्प्रूव हुआ, और आगे जाके भी इम्प्रूव होगा। और आपकी होगी जैसे आप लोग साइट पे देख रहे हो, ये हमारा रिटर्न रेशियोज है। तो इट्स कंपेरेबल विद इंडस्ट्री, लाइक वी आर बेटर देन इंडस्ट्री। एंड बिकॉज जैसे हम लोगों ने एफर्ट्स किया है और एफिशिएंसी बढ़ रही है कंपनी की, तो ये रिटर्न रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज और इम्प्रूव होते जाएंगे आगे। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन। प्लस फैशन एक्सेसरी यूनिट में भी हम कंपनी का फोकस जूट और कैनवस पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट इजीली सेलेबल और वेरी फास्ट मूविंग है। तो कंपनी का उस सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग मंथ्स।
कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा मेंटेन है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह। जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा इनका लॉजिस्टिक्स में इशू हो रहा था, तो उस कारण से थोड़ा अपना कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, बट दैट हैज बीन मोर देन compensated during the current year. So, like the company is a net cash flow earning company, and it hopes to maintain the same scenario in the future also. Mr. Dinner, you can take up the issue highlights. I think you are on the mute, sir. Yeah. Thank you, Sandeep ji. Speaking about the public issue, it is a total issue size is 56 lakhs 30,000 equity shares, which includes fresh issue of 45 lakh 80,000 equity shares and an offer for sale of 10 lakh 50,000 equity shares. The our face value rupees 10 each. The price band for the public issue is 61 to 64 rupees per share. The lot size is 2,000 equity shares, and the issue size at the upper end of the price band is 36.03 crores. The issue is opening on Friday, September 28, 2024, and issue is closing on September 24, Tuesday. On a pre-issue basis, promoter holding was 99.16%, and post-issue promoter holding will be 70.26%. Next And slide. now, Yeah, the company is raising money because it wants to improve its working capital base, because this business being working capital intensive, plus if the company is having good working capital support, तो कंपनी मतलब अपॉर्चुनिटीज का यूज ले सकती है। जैसे इस ट्रेड में प्राइस फ्लक्चुएशन, जैसे सर ने बताया, बहुत होता रहता है, तो वर्किंग कैपिटल सपोर्ट से अपने वो प्राइस फ्लक्चुएशन का पॉजिटिव बेनिफिट कंपनी के लिए ले सकते हैं। So keeping this in mind, the company has kept working capital as one of the main objects of the issue. Apart from this, जैसे Mr. Nandi ने बताया, the company has already, like the associate company of Phoenix is already ready for commercial operations from October 24 for the crude राइस ब्रांड एंड आरएसएन लाइक रेपसीड ऑयल। तो वो तो फर्स्ट फेज हो गया इनके ग्रुप का, मतलब वेंचर इनटू द इंडस्ट्री। और सेकेंड फेज रहेगा, फिनिक्स वुड स्टार्ट रिफाइनिंग द क्रूड एडिबल ऑयल so that it becomes like usable for human consumption. तो इस पर्पस के लिए कंपनी का अराउंड 6 करोड़ रुपीस का ऑब्जेक्ट फॉर द इशू में लगाया हुआ। और बैलेंस अमाउंट लाइक एक कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में एक है ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर्स वांट टू शेयर द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विद द इन्वेस्टिंग पब्लिक। So like around 6.7 crore would be offered for sale, or balance out of the 36 crores would be used for general corporate purposes and like issue expenses. So this goes about the objects of the issue. As sir said that the company enjoys a very good leadership in Bangladesh market. The leadership position and the good position in Bangladesh has been earned over the years because of the commitment which the company is keeping with its buyers. Like the company never goes back on whatever price commitment it has made, even though the company may face price escalation. And in order to mitigate this, the company, as sir also said, that the company has very good supplier base who are also equally dependent for the company. In case of any price increase or whatever fluctuations, they are they are ready to supply at the committed cost at which they have agreed to supply. Like this being a export business, quality assurance and quality control is the paramount factor in the business. So in order to ensure that the company is able to maintain its quality, the company has got a strong team of quality assurance people who work dedicatedly so that the company does not is found on the wrong side for quality purpose. So quality is the most important factor in the company's policy of business. और एक बात है, हम लोग जो
बांग्लादेश में जो मार्केटिंग करता है डायरेक्टली, मतलब most of the time we market directly, not based not through agent. एजेंट के थ्रू होने से क्या होता है, इसमें अगर कंपनी का गुडविल इतना अच्छा नहीं होता है, एंड मोर ओवर द वी हैव टू पे द कमीशन। तो ये हम लोग सेव करता हूँ क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बांग्लादेश में अच्छा खासा प्रेजेंस है एंड अच्छा खासा गुडविल है। तो बायर डायरेक्टली हम लोग को ही कॉल करते हैं और हम लोग उससे डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। एक पॉजिटिव साइड है हम लोग के लिए। और लाइक अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अब अगर कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई और क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो द कंपनी फील्स दैट बांग्लादेश बीइंग अ वेरी बिग मार्केट, द कंपनी हैज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, कंपनी ने अब वियतनाम और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी अब फोरवे करने का स्टार्ट करेगी। ऑलरेडी वी हैव गॉट ए स्मॉल ऑर्डर एज अ टेस्ट केस बेसिस फ्रॉम वियतनाम, और वो मोस्ट लाइकली विद इन 10-15 डेज उसका शिपमेंट भी हो जाएगा, सो दैट इसका बाद से हम लोग वियतनाम में भी अच्छा मार्केट प्रेजेंस बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और मोर ओवर वियतनाम में आपका जो ऑयल केक लगता है, तो वो हम लोग वर्धमान जो प्लांट है हम लोग का बीसीएल बायो एनर्जी, उसमें हम लोग मीट कर सकते हैं वियतनाम एंड फार ईस्ट। और लाइक वीकनेस जैसा है, लाइक वीकनेस स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है कंपनी में। जनरल जो बिजनेस में रिस्क रहता है वो कुछ अफेक्ट करता है और इट मे एक्ट एज अ वीकनेस, बट द कंपनी एज अ पॉलिसी ट्राइज टू like convert the weaknesses into strengths, like by following a very strict policy of quality and commitment. So like even though theoretically there is weakness, but the company is not adversely affected by those threats. तो geopolitical risk तो सब समय इंटरनेशनल बिजनेस में रहता है, तो that is one of the risks which the company में face. इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर द लास्ट 25 years the company has been working and the company has not faced any adverse situation by doing business with Bangladesh. जैसे कंपनी अपना ग्रोथ प्लान कर रही है थ्रू न्यू इनिशिएटिव्स, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर नंदी। Thank you, team. Phoenix Overseas team, thanks for giving us a valuable insight, and thanks Renavji for sharing details about the IPO. Now it's time to get interactive. I would invite all the participants to post their questions in the chat box, and we have our management team from Phoenix who are ready to answer to the questions. So let's go one by one. The first question is from Miss Shruti. Hi, sir. My question is, can you break down the revenue contribution from your key business segments? Yeah, like historically, the revenue breakup has been around 98% for the merchant export division, and balance 2% is like shared between fashion accessories and the cold storage business. But in the coming months, the company feels that this ratio would improve for fashion accessories and also for the cold storage division by addition of the mushroom plantation activity in the segment. The second question is from Mr. Neeraj. Hi, sir. You mainly export to Bangladesh. How have the recent event in Bangladesh impacted your export business, and what step are you taking to manage any potential challenges? बांग्लादेश में एक्चुअली एज सच हम लोग का कोई थ्रेट नहीं है। जो बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें 10 to 15 डेज थोड़ा सा डिस्टर्ब था लॉजिस्टिक पार्ट में, लेकिन हम लोग का पेमेंट पार्ट में या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और बाकी आफ्टर 15 डेज धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है, तो अभी तो फुल्ली नॉर्मल ही है, मतलब नियरली नॉर्मल ही है। तो हम लोग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फूड बिजनेस। अगर फूड बिजनेस में कोई अगर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो, बांग्लादेश का खुद का प्रोडक्शन इतना नहीं है कि दे कैन मीट अप देयर डिमांड, तो दे हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। एंड आपका इंडिया एकदम मतलब एकदम नेबरिंग कंट्री है, इसलिए
they they intend to import from India because their inventory cost will be less, and the banking expenditure will be less, and immediate they will get the material. So as such, there is no such challenge. We think. Ma'am, you are on the mute, I think. The next question is from Narendra. Are there specific segments or market where you see the most potential for growth? Uh, like as we have already shared with you that the company has entered into edible oil manufacturing. So the company feels that this sector would be a very big growth engine for the company. And apart from that, the cold storage business would also be a growth factor, considering the mushroom plantation and other like controlled environment activities which the company has is taking up. And fashion accessories business provides a very big growth potential. And since we feel that the Western economies would start improving in the coming months, so this business also provides a very good growth engine for the company. Next question. Next question is from Mr. Narayan. Does the company face any stiff competition from both local and international markets? If so, can you list down the competitors, top three? हम लोग लास्ट 24 ईयर से बांग्लादेश में बिजनेस कर रहा हूँ. ऐसा कुछ देखिए कंपटीशन तो रहेगा, एंड इट शुड बी ए हेल्दी कंपटीशन. तो ऐसा हम लोग का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटरनेशनल मार्केट्स में कभी कभी आता है, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका इंडिया में कोई प्राइस ज़्यादा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, तो कभी कभी हम लोग का थ्रेट फेस करना पड़ता है. लेकिन एक बात है, इंटरनेशनल मार्केट मतलब ब्राजील अर्जेंटीना से अगर वो लोग कोई मटेरियल लाएगा तो इट विल टेक टाइम. एंड अगर इंडिया से लाएगा नहीं, इमीडिएट विद इन 7 days दे विल गेट द मटेरियल्स. तो मैक्सिमम टाइम दे प्रेफर टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ऐसा हम लोग का कोई कॉम्पिटिटर का प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हाँ, आपका इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन. तो हम लोग का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो सप्लाई बेस है बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग का पेमेंट सिस्टम इतना अच्छा है, तो सप्लाई प्रेफर करते हैं हम लोग को पहले देने के लिए. तो अगर तो सब मतलब दूसरा को सप्लाई का पहले ही हम लोग को देने का कोशिश करते हैं. Next question is from Mr. Prashant. Hello, how much order have been received from It's a Vietnam? very small order. It is a 5 container of brown rice. We have actually हम लोग का पास ऑफर बहुत आया था, लेकिन वियतनाम हम लोग के लिए नया वेंचर है, तो इसलिए हम लोग टेस्ट केस में 5 कंटेनर का ऑर्डर लिया है. They are eager to offer a 45 container, but we avoid. पहले 5 कंटेनर करके देखें, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का बढ़ेगा. Next question. Next question is from Ms. Reshma. Where is your cold storage plant located and what is its capacity? Actually, हम लोग का cold storage plant है northern part of Bengal. It means in Malda, and the capacity is 11,000 metric ton, and it can store fruit, vegetable, ice cream, fish, and other frozen foods. We can हम लोग को सर्विस दे सकते हैं उसका. और हम लोग का जैसे कि पहले बताया, हम लोग को कोल्ड स्टोरेज पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोग मशरूम कल्टीवेशन का चालू कर रहा हूँ. Next. Mr. De. Hello, sir. I have some questions. So my first question is, what are your top performing segments and are there plans to focus more on them? On top line basis, the top performing segment is the merchant export business. So the company's focus would always be there on the merchant export business. But apart from that, the company is also entering into new consolidating its position in the other segments like the cold storage and the fashion accessories. And the refinery, And the setup of refinery, and we are also planning to import crude
crude rice bran oil from Bangladesh. एक्चुअली बांग्लादेश में आपका क्रूड इंपोर्ट करने का एक आपका फैसिलिटी है, इट विल बी टैक्स फ्री, वी डोंट हैव टू पे एनी ड्यूटीज। एंड आपका यहाँ कलकत्ता या आपका इंडिया पार्ट में डिमांड सप्लाई गैप है, तो इमीडिएटली इफ यू कैन इंपोर्ट इमीडिएटली वी कैन सेल इट आउट। Next question. Mr. Nix, hello, can you please justify the valuation of 22x PE at IPO price? Uh, the company is an export focused company. In the last 25 years, track record of the company has been that the company is always making profit. Plus, the company is having very good growth potentials. The company has already invested in a growth engine in terms of the edible oil manufacturing. So, like we feel that 22x is a very reasonable P for the IPO price of the company. Next, please. Mr. Narayan, how the proceeds from the issue will be utilized? Also, where do you see the company in next 5 years post listing? The objects of the issue have already been discussed. Like 10 crores would be for the enhancement of the working capital, 6 crores would be for starting of the edible oil refinery, and around 6.7 crores would be offered for sale by the promoters. And the balance amount would be for general corporate and issue expenses. And the company feels and the company is working in the direction of improving its growth or as well as profitability. Like the margin profile of the company, the management is focusing on improving the management uh, margin profile of the company so that the bottom line is also improved in the coming years. Ms. Deepika, what are the current industry trends that could positively or negatively impact your business? The current industry trends in terms of the fashion accessory business is improvement in the economy of the Western countries. That would act as a boost for the company's business. And for the merchant export business, again, because if the liquidity in the world economy improves, movement of these commodity items also improves and improves significantly. So, the current industry trends are favorable, and they will act as tailwinds for the companies. Just to add to what Sandeep ji has said, if I can come in over here, the segments where we talk of merchant export, agri as a sector was always a favorite sector of the government, and there's always different kind of supports which is coming, and the demand which is there from the neighboring nation, as sir mentioned, that there's the best option for them to import is from India. So that's why the export merchant export division always has a benefit which they enjoy. The fashion accessory segment, since they're exporting to international market, also focusing on European and other Pacific markets, the growth opportunity is very big for them, and the processing what they want to get into is also going to help them in a big way. So I think so the opportunity is immense for them in terms of the growth in the business that they can look at, and consistent growth will continue going forward as well. Next, please. Ms. Vidya, how has the business changed or grown over the years? The company started in the year 2010-11. That time the company, sorry, 2001. That time the turnover of the company was around 40 to 45 lakhs, and today the turnover of the company is above 550 crores. So you can just see what the growth has been. Next, Mr. Tradepe, could you provide more details on your key operational segments and geographical presence? एक्चुअली हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में मोस्टली थ्री बॉर्डर, देयर आर थ्री बॉर्डर्स, वन इज बेनापुर, वन इज रोहनपुर एंड वन इज दर्शना। तो रेल हम लोग तो आपका बाई रेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मालदा में वेयर हाउस है, तो मालदा वेयर हाउस का कैपेसिटी है 10 to 12,000 मेट्रिक टन वी कैन स्टोर। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जितना मटेरियल्स आता है डायरेक्टली बॉर्डर में चला जाता है। जो जी आपका मालदा का जो स्टेशन है गोल मालदा, वहाँ से बॉर्डर है 20 किलोमीटर होती है। एंड मालदा वेयर हाउस में हम लोग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है।
कोई अगर होगा ऐसा होगा इमीडिएटली वी कैन डिस्कस द मेटेरियल्स। और मालदा से और एक बॉर्डर उसका सामने है, दैट इज हिली। वो भी हम लोग का मालदा से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर होगा बॉर्डर, उसमें से भी हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम आपका मालदा से ही होता है, मालदा या हिली से। Namaste. My second question is, how does your company balance short-term profitability with long-term growth? Uh, Short-term profitability with long-term growth. The company tries to utilize the short-term profitability to the maximum possible extent for funding the long-term growth. Next, please. Ms. Shruti, how much of your business comes from repeat customers and how do you keep them from coming back? 70% या हम लोग का रिपीट कस्टमर है एंड 30% न्यू कस्टमर है। एंड जो न्यू कस्टमर है दे गेट द रेफरेंस फ्रॉम अवर रिपीट कस्टमर, ये आप इनसे ले सकते हैं, दे आर वेरी गुड। Next, please. Mr. Path, hello sir, how do you handle changes in prices of raw materials or other inputs? एक्चुअली जब हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग इमीडिएटली उसको परचेज कर लेते हैं। इमीडिएट मतलब हम लोग उसको इमीडिएट परचेज भी करता हूँ अप टू, और साथ साथ हम लोग का फॉरेक्स बुकिंग भी साथ साथ ही होता है, तो इसलिए हम लोग का कोई सच कोई चैलेंजेस नहीं है, मतलब Next. सेल परचेज एक ही साथ होता है। Mr. Ayush, can you explain the factors driving the significant growth in the revenue from financial year 2022 to 2024? Like there were two factors which contributed in the growth from 22 to 24. One of them was removal of bottlenecks in the logistics infrastructure for exporting to Bangladesh. Like up to 2022, there were a lot of issues at the ports, land ports in Bangladesh. Because of that, the time required for completing the export was getting elongated. So the government of West Bengal intervened and they came up with a policy of providing a system of slot for trucks to be exported. So by implementation of this system of slot booking, the bottlenecks which were there in the logistics have been removed. Like 99% they have been removed. So because of improved flow of the materials, we got support and that also contributed towards improvement in the business of the company. And apart from that, as Sir has been saying that we enjoy a very good goodwill amongst our buyers in Bangladesh because of the like price commitment and quality commitment. So this factor played a very important role in improving the like top line and other factors contributing to the growth of the company. Next, please. Ms. Deepika, hello sir, how do you decide on the prices of your products, services, and how do you stay competitive? Like basically the merchant export division of the company, like the pricing depends upon international pricing of the commodities. So like over the international prices, we as a group, as a company, as a business house, enjoy goodwill premium in our exporting countries. So in Bangladesh, like our quality has got a trade name. It's called Phoenix quality. So if somebody, suppose a competitor wants to enter into Bangladesh market, the buyers in Bangladesh compare their quality with our quality And commitment also. and commitment also. So like pricing, even though it's the underlying factor contributing for the price is the international market pricing, but over and above that, we have enjoy our goodwill for our good relation and good business ethics with Bangladesh. And about our fashion accessories business, the pricing depends upon our quality, the more quality and the design which we offer. We as a policy always provide new designs to the buyers. So because of the new designs and the novelties in the design, we command a good price for our like.
products. And this cold storage business of the company, like even though it is regulated by government of West Bengal, but because of the good quality of the produce which the farmers get after they store the commodities when they bring it out, the quality is extremely good, and we have got a very good name for Phoenix in the area. So like we don't want to compromise on the regulated pricing, but like as we are entering into controlled environment farming for mushrooms, we feel that the quality of the products which we will offer would help us in commanding better prices for the produce. Next, please. Mr. Gaurav, what are the key risks that could affect your business? The biggest risks would be geopolitical, like in case there is any big problem in the world, which like stalls the international trade, definitely we'll be facing a big risk as far as that is concerned. But still, that risk won't be something which can eradicate the existence of the company, because the company is a very light asset light. The company's business model is of a very asset light type. So because of that, even though the company may face risk in terms of lower business, but it won't face risk in terms of like destruction of its assets. So, like international risk is always there. Next. Mr. Hay, thank you, sir, for answering all the questions and all the best for the IPO. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Sahil, what changes in the industry do you think will have the biggest impact on your business? Like changes in the industry in terms of like merchant export business. Like if suppose tomorrow a country like Bangladesh starts growing whatever requirement they have, they start producing and growing in their country. We may like that may be a big impact for us, but practically that doesn't seem to be possible, because considering the population of Bangladesh and the land area which it has, it is not theoretically possible for them to like produce everything for their requirement captively. So like So if I can add over here, when we are talking of impact, let's also consider a positive impact. Being into merchant export and having so many years, more than 2 decades of experience, the more and more demand over there, more and more commodities we can supply over there. So that is a positive impact which can come to our business going forward as well. Thank you. Next, please. It's again from Mr. Tradepi. What markets or region are you focusing on for future expansion? like as sir already said that like we have started foraying into the Vietnam market. Apart from that, we may have a very good market in the African countries and Middle East countries. And for our fashion accessories business, we have got a very big market in the European countries, and we are trying to expand into the Latin American countries also in the coming months. Next, please. Mr. Prashant. Are there any partnership or collaborations that are helping you grow? Like partnerships, we don't have formal partnership as such, but like considering the long relation with our suppliers and our buyers, you can say that we have got a very cordial partnership and collaboration with them. But there is no formal collaboration as such. Mr. Neeraj, great explanation. Best of luck with your IPO. Thank you. Thank you. Thank you. Next, Ms. Deepika. Thank you, sir. Next, Path. All the best for your IPO. Thank you. Thanks. Thank you all for your thoughtful questions. I believe we have covered the majority of them. If you have any further questions, please do not hesitate to reach out to us after the session. We'll be happy to assist you. I'd like to extend my best wishes to Phoenix team and Mr. Renav a tremendous success with their IPO and all future endeavors. This concludes our virtual IPO meet for Phoenix Overseas Limited, and thank you all for joining us. Thanks. We'll soon convene again for our next virtual IPO meeting. Until then, stay connected. Wishing you all a wonderful evening. Thanks all. Thank you. Thank you.